सभापति महोदय कि राष्ट्रपति महोदया ने यह बताया कि हमारी सरकार ने क्या काम किए और अमृतकाल में आगे क्या काम करने जा रहे हैं। उन्होंने यह शब्द प्रयोग किया था अपने अभिभाषण के अंतिम चरण में कि 25 वर्ष का यह अमृतकाल है, यह भारत का वो आधार बनाएगा जो आने वाले 1000 वर्ष तक भारत के भविष्य का निर्धारण करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा 10 साल का परफॉर्मेंस है, 25 साल का प्रोग्राम है और 1000 साल की दृष्टि है और हम 10,000 साल पुराने भारत से भी प्रेरणा लेते हैं। यानी हमारी सोच चुनाव मूलक नहीं है, सभ्यता मूलक है। आवर विजन इज नॉट इलेक्टोरल, इट इज सिविलाइजेशनल। इसीलिए हम 1000 साल आगे के भारत के भी सोचते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता 20 साल बाद क्या होगा, 25 साल बाद क्या होगा, पर हम 1000 साल आगे के भारत के बारे में सोचते हैं, 25 साल के आगे के भारत के बारे में योजना बनाते हैं और हजारों साल पहले के भारत से प्रेरणा लेते हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे विरोधी चाहे जो भी कर ले, मगर सभापति महोदय जो हमारी राष्ट्रपति महोदया ने कहा था कि सब लोग आए, मैं इनसे अनुरोध करूंगा आइए, साथ में मिलिए, साथ में विचार करिए और उसके बाद एक साथ देश के विकास के लिए आगे बढ़िए। अभी जो आपको प्राप्त हुआ है इसको मंजिल समझिए नहीं, अभी हम सबको मिलकर देश के लिए बहुत आगे चलना है। और मैं अंत में एक वाक्य जरूर कहना चाहूंगा, 21वीं सदी भारत की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस प्रकार के वाद विवाद के बावजूद होती रहेगी, इस प्रकार के वितंडावाद के बावजूद हम आगे बढ़ते रहेंगे और यह उसी विचार को लेकर आगे बढ़ेगी। राष्ट्रपति महोदया ने यह बात भी बताई कि आज दुनिया में संघर्ष है, आज दुनिया में सभ्यताओं के संघर्ष की बात कही जाती है और उस संघर्ष का समाधान कौन देगा? सिर्फ भारत से, जहां पर कि सभ्यताओं के समन्वय का आधार बनता है। और उस सभ्यताओं के समन्वय का आधार भारतीय संस्कृति और हमारे हिंदू धर्म की वह अवधारणा ही बनेगी जिससे लड़ने का संकल्प आप लेते हैं। इसलिए 21वीं सदी का भारत आगे बढ़कर उठने जा रहा है। वी आर ऑल सेट टू राइज, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। हम विश्व को दबाने के लिए नहीं, विश्व के बंधु बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उस विचार से आगे बढ़ रहे हैं जो हजारों वर्षों की हमारी प्रेरणा है। तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वह प्रसिद्ध पंक्ति, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, के आखिरी छंद को कहकर अपना विषय समाप्त करूंगा, जो ये बताएगा कि भारत किस रूप में विश्व का आगे बढ़ने वाला है। कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, हमने किसी को परेशान नहीं किया। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। इसलिए अंत में एक और कहता हूं, इसलिए आश्वस्त रहिए, आप चाहे या न चाहे, अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। धन्यवाद। The 2025 Union Budget is nothing but a Marich moment from the Ramayana, an elaborate illusion designed to deceive. Just as the demon Marich took the golden form of deer to lure Ma Sita away, the NDA government has crafted a shiny, dazzling budget promising prosperity while hiding the economic catastrophe beneath. This budget might shimmer, but it's hollow as a treasure chest filled with air. It has flashy promises of tax cuts, economic growth, infrastructure hype to distract the common man, but beneath this illusion lies a brutal reality. Hidden indirect taxes, soaring inflation, slashed public spendings, and last but not the least, corporate giveaways. Just as Ma Sita was misled, the common people are being pulled away from financial stability straight into a fiscal wrecking ball. This government proudly proclaims no income tax for incomes up to 12 lakh rupees. But behind the scenes, they silently ensure the lost revenue is recovered through rising fuel prices, inflated service charges, hidden taxes on daily essentials, and the middle class, much like Lakshman warning Ma Sita, is skeptical, but BJP's propaganda and PR machinery is desperately working overtime to ensure
that the common man and the people of this country still chase the golden deer anyway. What is given by one hand is being swiftly taken by the other. Just as in Ramayana, by the time people realize and recognize the deception, the economy has already been handed over to the Ravanas of crony capitalism, while the common man is left struggling to afford groceries, fuel, travel, healthcare, and even a simple movie night, all while being taxed for merely just existing. Madam, the budget presented by the NDA government is a masterclass in half-truths, half accountability, half delivery of schemes, and half-hearted governance. From half-built houses under PMAY to half-achieved farmer income targets, the government continues to sell dreams while delivering only fragments of reality. Infrastructure projects remain half-finished, welfare schemes reach half the beneficiaries, and their failed economic policies cater to half the population, leaving the rest in uncertainty. This is not a vision for developed India. It's a half-baked agenda wrapped in propaganda. Make no mistake, much like demonetization, GST, and the draconian farm laws, the full extent of devastation will only be visible when the smoke clears. I'll start with half-truths. So the NDA government in Maharashtra launched the Ladki Behan. Ma'am, the NDA government in Maharashtra launched the Ladki Behan DBT scheme for women in Maharashtra just before the assembly elections last year to use it as a political bait. Now with the elections over, they have conveniently started scrutinizing beneficiaries, thus removing 60 lakh women from the scheme. This is yet another Jumla running deep in your veins. And people see through this betrayal and they are watching. Another betrayal, ma'am. Before the elections, the government promised a legal guarantee for MSP. After the election, the promise have disappeared without a trace. Madam Finance Minister is here and I'm glad she's present in the House. She in her speech mentioned that, and she began her speech with a flourish on agricultural growth. But when it came to MSP, the one demand that every farmer of this country has raised, there was only silence. No legal guarantee, no relief from the crippling debt. Instead of waiving farm loans, the government has increased the Kisan credit limit, which essentially means handing farmers more debt than relief.